पेज नंबर 27 तक कर लिया था हमने, राइट? Okay, consider the nature of curiosity से. Okay, fine. So who will start today? I will start first, madam. Okay, sure. Thank you. Even infants seem to know what they want and don't want. When adults encounter this unique display of individuality expressed by an infant, they are usually surprised. They assume that infants have nothing inside of them that makes them uniquely who they are. How else would infants express their individuality than by what in their environment attracts or replaces them? I call this inner directed guidance, the force of natural attraction. Natural attractions are simply those things about which we feel a natural or passionate interest. Ours is a big and diverse world, and it offers each of us a great deal to learn about and experience. But that does not mean each of us has a natural or passionate interest in learning about or experiencing all there is. There is some internal mechanism that makes us naturally selective. If you think about it, I am sure you could list many things to do or be that you have absolutely no interest in. I know I could. You could also make another list of the things you are only marginally interested in. Finally, you could list everything you have a passionate interest in. Of course, the list goes smaller. The list gets smaller as the interest level rises. Where does passionate interest come from? My personal view is that it comes from the deepest level of our being, at the level of our true identity. It comes from the part of us that exists beyond the characteristics and personality trait we acquire as a result of our social upbringing. पहले यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं, then we will move on to the dangers part. यहाँ से शुरू किया था हमने. Some type of internal identity, I think, gradually developed. What is self, in which thing I am interested or in which thing I am not interested. And when the child grows up, his identity focuses on fewer things in which he is interested. Please proceed. That's some internal mechanism that makes us naturally selective. If you think about it, then I'm sure you list many things do or be that you have absolutely no interest in it. कोई और शेयर करेगा अपनी learning? Yeah, ma'am. So, hi, this is Santosh. So here, author is talking about the inner being. Actually, I think he's referring to the individuality of each person. कि हर एक आदमी के अंदर एक अनकॉमन पर्सनैलिटी होती है जिसको ये बीइंग रेफर कर रहा है, और हर एक ये जो इंडिविजुअल होता है उसका एक अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का. Right. So my personal view is that it comes from the deepest level. Yes. जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का जो पर्सपेक्टिव बना होता है बिकॉज ऑफ सोशल अपब्रिंगिंग के कारण बना होता है. Right. Mr. Mark is talking about the dangers. मैडम और एक तो चीज ऐड करना चाहूंगा. एक तो क्या बोल सकते हैं कि ईगो प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग में कि मैं सोच रहा हूँ ये प्राइस रेज कर रहा है, ये क्यों नहीं रेज कर रहा है? क्योंकि मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मेरे पास इतना ये है, या मेरा अपब्रिंगिंग इसी टाइप का है. मैं सोच रहा हूँ जो वर्ड है ना, आई थिंक इट विल गो अप और आई थिंक इट विल गो डाउन. व्हेन दैट इज चैलेंज्ड, द ट्रेडर गेट्स अपसेट, and being upset, he once again goes to do some error. It is my perception. It is at the deepest level of our being that the potential for conflict exists. The social structure that we are born into may or may not be sensitive to these inner directed needs and interests.
For example, we may have been born into a family of extremely competitive athletes, but feel a passionate interest in classical music or art. You may even have natural athletic ability, but no real interest in participating in athletic event. Is there any potential for conflict here? In a typical family, most members could put a great deal of pressure on you to follow the footsteps of your brother, sister, and parents. They do everything possible to teach you their way and how to get the most out of your athletic ability. They discourage you from seriously pursuing any other interest. You go along with what they want because you don't want to be ostracized, but at the same time, doing what they want you to do just just does not feel right. Although everything you have learned and been taught argues in favor of becoming an athlete. The problem is it does not feel like who you are. The conflicts are result from what we are taught about who we are supposed to be and the feeling that resonates at the deepest level of our being is not at all uncommon. I would say that many if not most people grow up in a family and cultural environment that gives little, if any, objective, non-judgmental support to the unique way in which we feel compelled to express ourselves. This lack of support is not simply an absence of encouragement. It can be as deep as outright denial of some particular way in which we want to express ourselves. For example, let us look at a common situation. A toddler who, for the first time in his life, noticed this thing, which we call a vase on the coffee table. He is curious, which means there is an inner force that is compelling him to experience this object. In a sense, it is as if this force creates a vacuum in his mind that has to be filled with the object of his interest. So he focuses on the vase and with a deliberate interest crawls across the vast expanses of living room floor to the coffee table. When he gets there, he reaches up to the edge of the table to pull himself to his feet. With one hand firmly on the table to maintain his balance, his other hand reaches out to touch this thing he has never experienced. Just at that moment, he hears a scream from across the room. No, don't touch that. Startled, the child falls back on his butt and begins to cry. Obviously, this is a very common occurrence and one that is completely unavoidable. Children have absolutely no concept of how they can injure themselves or how valuable something like a vase can be. In fact, learning what is safe and what is not and the value of things are important lessons the child must learn. However, there are some extremely important psychological dynamics that works here that have a direct effect on our ability to create the kind of discipline and focus necessary to trade effectively later in life. थैंक यू। चलिए अब आपसे आपकी लर्निंग शेयर करते हैं। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया था हमने द डेंजर्स। एनीथिंग जो आपको समझ में आया और कैची लगा हो? तो मतलब or when someone is going to start afresh or start a new way something, there are a lot of curiosity like a child. Maybe the person is adult and his curiosity is to be well explained and the good thing and bad thing, that the pros or cons of the thing should be explained to him or he should acquire knowledge in that regard. राइट। और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी लर्निंग इस पैराग्राफ को लेकर? यस मैम, हम्म। इसमें बताया है कि देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एट फैमिली लेवल एज वेल कि whatever your parents, sister, brothers, they are doing, you have to do the same thing because they think that कि उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही आगे वाला जो हमारा पीढ़ी आएगा वो भी सेम चीज यूज करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग होता है। एक तो ये बात इसमें थी, और दूसरा ये है कि जो इन्फेंट वाली बात बताई इसमें लास्ट में कि जब हमारी अपब्रिंगिंग शुरू होने लगती है तभी से हमें जो हमारे एल्डर्स लोग शुरू कर देते हैं कि ये नहीं करो, ये करना है, ऐसे नहीं करना है, हाँ, इसको करना है, ये सब राइट। चीजें बताने लग जाते हैं। वो क्या होता है कि अगर एक दिन में
4-5 बार भी कोई बोल देगा तो बड़े होते होते बहुत बार बोल देंगे तो हमारे दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एब्सोल्युटली। और तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। बहुत ज्यादा। यस। उसको एक दो बार ही समझाने की जरूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है। यस। आगे बढ़ते हैं और अपने स्टार रीडर को बुलाते हैं, संतोष जी को। चलिए स्टार्ट करते हैं संतोष जी से नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट हैपेंस, राइट? हाँ, यहाँ से या ना, स्टार्टल द चाइल्ड फॉल्स बैक। ना, ये उन्होंने पढ़ दिया शायद। ये नेक्स्ट वाला है, व्हाट हाँ, हैपेंस what व्हेन। what happens when we would deny the opportunity. Yes. So, what happens when we are denied the opportunity to express ourselves in the way we want to, or we were forced to express ourselves in a way that doesn't correspond with the natural selection process? The experience creates an upset. Being upset implies an imbalance. But what exactly is out of balance? For something to be out of balance, there has to be something that's in balance or in equal proportion in the first place. That something is the relative degree of correspondence that exists between our inner mental environment and exterior environment where we experience our lives. In other words, our needs and desires are generated in our mental environment and they are fulfilled in the exterior environment. If these two environments are in correspondence with one another, we are in a state of inner balance and we feel a sense of satisfaction or happiness. If these environments are not in correspondence, we experience dissatisfaction, anger, and frustration, or what is commonly referred to as emotional pain. Now, why would not, okay, now why would not getting what we want or being denied the freedom to express ourselves in some particular way cause us to experience emotional pain? My personal theory is that needs and desires create mental vacuums. The universe in which we live has a natural tendency to not tolerate a vacuum and moves to fill it whenever one exists. The philosopher Spinoza observed centuries ago that nature abhors a vacuum. Suck the air out of a bottle, and your tongue and lips will stick to the mouth of the bottle because you have created an imbalance, a vacuum, which now must be filled. What are the dynamics behind the expression? Necessity is the mother of all invention. The recognition that a need creates a mental vacuum that the universe will fill with inspiring thoughts if your mind is deceptive. The thoughts in yeah. The thoughts in turn can inspire movement and expression that result in the fulfillment of that need. In this respect, I think our mental environment works like the universe at large. Once we recognize a need or desire, we move to fill the vacuum with the experience in the exterior environment. If if we are denied the opportunity to pursue the object of this need or desire, it literally feels as if we are not whole or that something is missing, which puts us into a state of imbalance or emotional pain. Do do our minds also abhor a vacuum once one has been created? Take a toy away from a child who is not finishing playing with it, regardless of how good your reasons may be for doing so, and the universal response will be the emotional pain. यस, यस, चलिए अब आपसे लर्निंग शेयर करते हैं। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, द एक्सपीरियंसेस। What happens when we are denied the यस। opportunity? Yes. Yes, तो इसमें ऑथर फोकस कर रहा है इमोशनल पेन के ऊपर एंड इम्बैलेंस विच ही इज कॉलिंग वैक्यूम। मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो एक्चुअली जो नीड्स होती है वो बोथ फेज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल एज वेल। तो जो जब
हमारा जो डिजायर्स होती हैं वो बोलती है कि हमने अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उसको जो फुलफिल करता है वो एक्सटर्नली हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वैक्यूम फिल अप हो जाए और बैलेंस बन जाए। पर हर बार ऐसा होता नहीं है। जब जब हमारा जो एक्सपेक्टेड डिजायर्स जो रियलिटी से मैच नहीं करती है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और उसकी वजह से हमें इमोशनल पेन सहन करना पड़ता है। बोलने का मतलब ये है। राइट, ये एक लाइन है, द फिलोसोफर स्पिनोजा ऑब्जर्व्ड centuries ago यस, that nature abhors a वैक्यूम। vacuum. और एक लाइन मुझे इसमें और भी वो लगी, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल और इन्वेंशन। इन्वेंशन, है ना। यस हु यस डजंट नो दिस, कि जब तक आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है तब तक आप उस चीज के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि राइट राइट। अभी हम सबको जरूरत महसूस हो रही है कि भाई ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत बड़ा रोल जो है वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का भी है, इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। यस तो यस। और कोई और अपनी लर्निंग शेयर करना चाहेगा इस पैराग्राफ से, या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई पढ़ना I चाहे? agree. I am यस also श्रुति। agree with this line. अपने जब लॉसेस होने लगते हैं तो बहुत वो छोड़ देते हैं पूरा अपना, बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं और पेशेंस नहीं रखते हैं। और प्रॉफिट होता है तो लगता है और ज्यादा आएगा और ज्यादा आएगा, पूरा मतलब कुछ एक मेथड ही नहीं रखते, डिसिप्लिन मेंटेन भूल जाते हैं सब कुछ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। आ, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए धीरे 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 अपने ऊपर काम करना है, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात मैं भी सर से कभी कभी जो सुनती हूँ वही आप सबसे शेयर करती हूँ, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल ही बनते जाए। तो नहीं तो 100 रुपए का स्टॉक जो है वो एक महीने में 1000 रुपए का हो जाएगा। यस वो हाँ हाँ। डिप्स तो देगा ही, कि भाई क्योंकि वो शॉर्ट करने की भी आपको मौका देगा और लॉन्ग करने का भी मौका देगा। और यस यही यही तरीका है, यही जो मार्केट का जो गेम है वो यही है। और इसको जो जितनी जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी उसके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? थोड़ा आगे कर दिया हमने, बाय द टाइम वी आर 18 years old। एनीवन? कहाँ है आज सब भाई? आई कांट सी पार्टिसिपेंट्स। उर्मिला जी, वुड यू लाइक टू रीड? Yes, yes, I'll read. प्लीज प्लीज, थैंक यू। By the time we are 18 years old, we have been on Earth approximately 6,517 days. On an average, how many times per day does the typical child hear statements like, "No, no, you can't do that. You can't do it that way. You have to do it this way. Not now. Let me think about it. I will let you know. It can't be done. What makes you think you can do it? You have to do it. You have no choice." These are just a few of the relatively nice ways in which all of us are denied individual expression as we grow up. Even if we only heard such statements once or twice a day, that still adds up to several thousand denials by the time we reach adulthood. I call these lands of experiences denied impulses to learn, impulses that are based on an inner need originating from the deeper part of our identity, from the natural selection process. What happens? What happens to all of these impulses that have been denied and left unfulfilled? Do they just go away? They can.
if they are reconciled in some way. If we do something or someone else does something to put our mental environment back into balance, what can put our mental environment back into balance? There are a number of techniques. The most natural one, especially for a child, is simply to cry. Crying is a natural mechanism, nature's way, or reconciling their denial, unfulfilled impulses. Scientific researchers have found tears to be composed of negatively charged ions. If allowed to take its natural course, crying will expel the negatively charged energy in our minds and bring us back to a state of balance, even though the original impulse was never fulfilled. The problem is that most of the time, events are not allowed to take their natural course, and the denied impulses are never reconciled, at least not while we are still children. There are many reasons why adults don't like it when their children, especially boys, cry and do everything they can to discourage their behavior. There are just as many reasons why adults will not bother to explain to children why they are being forced to do something they don't want to do. Even if adults do try, there are no assurances that they will be effective enough to reconcile the imbalance. What happens if these impulses aren't reconciled? They accumulate and unusually end up manifesting themselves in any number of addictive and compulsive behavior patterns. A very loose rule of thumb is whatever we believe we were deprived of as children can easily become addictive in adulthood. For example, many people are addicted to attention. I am referring to people who will do most anything to draw attention to themselves. The most common reason for this is that they believe they either didn't give enough didn't get enough attention when they were young or didn't get it when it was important to them. In any case, the deprivation becomes unresolved emotional energy that compels them to behave in ways that will satisfy the addiction. What's important for us to understand about these unreconciled, denied impulses that exist in all of us is how they affect our ability to stay focused and take a disciplined, consistent approach to our trading. वंडरफुल, वेरी गुड। चलिए उर्मिला जी से अब उनकी शेयरिंग लेते हैं। मैं ऊपर कर देती हूँ। Basically, here author is wanting to say that each one of us have got denial in the young age, isn't it? Not राइट। even young age, rather from young age. Young age से ही हमें denials मिलता है और जो चीजें reconcile नहीं कर पाते हम लोग, जो हमारे अंदर रह जाती है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है, वो फिर एक एडिक्शन बन जाती है हमारे लिए। राइट। This is what he is trying to say. तो जो जो चीजें हम नहीं कर पाते वो हमें करने का मन करता है और फिर हम उसको नहीं कर पाते। समथिंग लाइक दिस। जैसे बच्चे को अगर किसी चीज के लिए मना करो तो उसके लिए बड़ा इजी है कि रो लिया। एंड ही ऑल्सो सेड वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि जो रोने से जो जो टीयर्स हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। दैट मीन्स जब हम रो लेते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल जाती है एंड वी आर अगेन रिचार्ज्ड। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। एम आई करेक्ट? या डेफिनेटली 100% करेक्ट। और ये मैंने भी आज ही पढ़ा है पहली बार। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों की वजह से ये मेरी नॉलेज में एक और चीज जुड़ गई कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये पाया है कि आंसू में नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और शायद इसीलिए कहते हैं कि रो लो मन हल्का हो जाएगा, या कई बार रोने के बाद मन हल्का हो जाता है। लेकिन मैंने आदमियों को तो रोते हुए देखा ही नहीं है कभी। नहीं इनका नहीं, मन ऐसा कैसे नहीं है, हल्का बहुत होता आदमी होगा? रोते हैं पल्लवी जी, बहुत आदमी रोते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोते हैं। एंड जनरली जनरली परसेंटेज कम होती है,
औरतें बहुत जल्दी रो देती हैं, इसलिए मुझे लगता है वो जल्दी जल्दी अपना सारा जो इसीलिए वो ज्यादा भड़ास है लंबा निकाल लेती जीती हैं। है, वो ज्यादा Yes, लंबा जी लेती है, बिकॉज दे right. डू नॉट कीप थिंग्स टू देयर हार्ट, और वो रो के निकाल लेती है उस नेगेटिविटी को। तो जो लोग आई थिंक अपने रो के या अपने एक्सप्रेस थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं या अपने फीलिंग्स को निकलने देते हैं, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द एनवायरमेंट। दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से। 100%, I totally believe. This is what I was looking for. Yes. What's important for us to understand about these unreconciled, denied impulses that exist in all of us is how they affect our ability to stay focused and take a disciplined, consistent approach to our trading. Absolutely. तो अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है, हम फोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं, या कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे अंदर, है ना, वो क्विक क्विक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक मैंने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग करना, एज पर एज मेरी नॉलेज में, उसके पीछे बैक एंड में बहुत सारे जो चीजें हैं वो हो रही होती हैं, कि कितना आप डिसिप्लिन्ड हो, कितने फोकस के साथ आप चीजें नोटिस कर रहे हो। और इंटेलिजेंट होना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट डिसिप्लिन्ड होना, और कि जब मेरा स्टॉप लॉस आएगा तो मैं लूंगा, यही मेरी एंट्री है, एंट्री निकल गई तो अब मुझे एंट्री नहीं करनी है, ये मेरा Hmm. एग्जिट है तो ये मुझे एग्जिट करना है, फिर चाहे उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल प्रिंट हो जाए, मुझे उसका दुख नहीं मनाना है, अरे यार ये तो इतना चला गया, मैं तो पहले ही निकल, है ना। तो वो नहीं सोचना है, क्योंकि वो उस ग्रीन कैंडल के बदले एक बड़ी सी रेड कैंडल भी हो सकती थी, हम भविष्यवक्ता नहीं है। तो ये चीजें क्योंकि हमने बचपन से कहीं ना कुछ हमारी अपनी पर्सनालिटी में, हमारी अपनी थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, और उसी के अगेंस्ट जो नेगेटिविटीज हमारे अंदर है थोड़ी बहुत भी, हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है, एज पर ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स। एम आई राइट? Yeah. लास्या जी, आप पढ़ना चाहेंगी? आर यू देयर? Yeah, sure, Pallavi, I will do that. थैंक यू। Thank you. So, to operate effectively in the trading environment, we need rules and boundaries to guide our behavior. It is a simple fact of trading that potential exists to do enormous damage to ourselves. So, damage that can be way out of proportion on what we may think is possible. There are many kinds of trades in which the risk of loss is unlimited. To prevent the possibility of exposing ourselves to damage, we need to create an internal structure in the form of specialized mental discipline and a perspective that guides our behavior so that we always act in our own best interest. So, this structure has to exist within each of us because, unlike society, the market doesn't provide it. So, the markets provide structure in the form of behavior patterns that indicate when an opportunity to buy or sell exists. But that's where the structure ends. So, with a simple indication. Otherwise, from each individual's perspective, there are no formalized rules to guide your behavior. So there aren't any even any beginnings, middles, or endings, as there are in virtually every other activity we participate in. This is an extremely important distinction with profound psychological implications. The market is like a stream that is in constant motion. It doesn't start, stop, or wait. Even when the markets are closed, prices are still in motion. There is no rule that opening price on any day must be the same as the closing price the day before. Nothing we do in society properly prepares us to function effectively in such a boundaryless environment. Even gambling games have built in structures that make them much different from trading and a lot less dangerous. For example, if we decide to play blackjack, the first thing we have to do is decide how much we are going to wager or risk.
This is a choice we are forced to make by rules of the game. If we don't make the choice, we don't get to play. In trading, no one expect yourself is going to force you to decide in advance what your risk is. In fact, what we have is a limitless environment where virtually anything can happen at any moment, and only the consistent winners define the risk in advance of putting on a trade. For everyone else, defining the risk in advance would force you to confront the reality that each trade has a probable outcome, meaning that it could be a loser. Consistent losers do almost anything to avoid accepting the reality that no matter how good a trade looks, it could lose, without the presence of an external structure forcing the typical trader to think otherwise. He is susceptible to any number of justifications, rationalizations, and the kind of distorted logic that will allow him to get into a trade believing that it cannot lose, which makes determining the risk in advance irrelevant. वेरी गुड। ये बिल्कुल कोर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात अब हुई है। Yeah. What I understand from this is you cannot proactively plan so much about your risk because it's a limitless environment what we are doing, and compared to even the blackjack, I think it's something there also you can kind of decide your risk, but where we are in the trading, we it's a limitless environment. So some people proactively do that, but a lot of people fail to do that. That's what I understand. यस यस, जोरदार तालियां पहले उर्मिला जी के लिए और अब लास्या जी के लिए। एक्चुअली जो मुझे भी इस पैराग्राफ में समझ में आया वो यही कि बाउंडलेस एंड लिमिटलेस, ये दो चीजें हमने देखा इधर कि इधर आप एक ही दिन में आकर के ऐसा नहीं सोच सकते हो कि ऐसा ही होने वाला है ना, या कहते हैं ना अजम्पशंस पर नहीं चलेगा। और रिस्क जो है वो यहाँ है, रिस्क लेकर आपको, क्योंकि भाई पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और रिस्क टोटली है। तो यहाँ जो ऑथर है उसने इनफैक्ट गैम्बलिंग गेम्स से भी कंपैरिजन किया कि वो भी सेफर है देन द ट्रेडिंग, राइट? कोई और शेयरिंग करना चाहेगा? संतोष जी? मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो आपने डिस्कस कर लिए। इसमें मतलब पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोगों से ये सुना है कि ट्रेडिंग ही गैम्बलिंग है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद ये पता लग रहा है कि नहीं, गैम्बलिंग में रिस्क पता होता है, डिफाइंड होता है। इसमें रिस्क जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं सिर्फ वो ही रिस्क को डिफाइन कर पाते हैं, बाकी लोग जो कंसिस्टेंट लूजर होते हैं मोस्टली वो रिस्क डिफाइन नहीं कर पाते एंड दे लूज मोर मनी। हाँ, क्योंकि वो एक बार लूज करते हैं फिर उन्हें लगता है कि अगली बार एक और चांस लेते हैं। यस, सो दैट इज गैम्बलिंग दे आर डूइंग। इन्होंने बताया कि जो मार्केट होती है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाती रहती है। जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ है तो उसके बाद वो ऐसा स्ट्रक्चर देगी कि वहां पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। राइट। लेकिन लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ग्रीन ग्रीन कैंडल आता रहेगा और पैसा बढ़ता रहेगा। राइट राइट, एब्सोल्युटली। अभी ऐसा ऐसा अगर होता रहेगा तो वही जो बात हमने अभी पहले की थी, तो 100 रुपए का स्टॉक एक ही महीने में 1000 रुपए का हो जाएगा। यस है ना? हमारी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। राइट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? अंसार जी आप हैं? अंसार जी आप पढ़ेंगे? हाँ मैम पढ़ ले। हाँ प्लीज। All gambling, all gambling games have specified beginnings, middles, and endings based on sequence of events that determine the outcome of game. Once you decide you are going to participate, you can't change your mind. You are in the duration. That's not true of trading. In trading, price are in constant motion. Nothing begins until you decide it should. It lasts as long as you want.
and it doesn't end until you want it to be over. Regardless of what you may have planned or wanted to do, any number of psychological factors can come into play, causing you to become distracted, change your mind, become scared, or overconfident, in the other words, causing you to behave in a way that are erratic and unintended. Because gambling games have forming ended, they force the participants to be an active losers. If you are a losing streak, you can't keep on losing without making a conscious decision to do so. The end of each game causes the beginning of new game, and you have to actively subject more of your assets to the end of each game causes the beginning of new games, and you have to actively subject more of your assets to further risk by reaching into your wallet or pushing someone chips to the center of the table. Trading has no formal ending. The market will not take you out of the trade unless you have the appropriate mental structure to end a trade in a manner that is always in your best interest. You can become a passive loser. This means that once you are in a losing trade, you don't have to do anything to keep on losing. You don't even have to watch. You can just ignore the situation and market will take everything you own and more. One of many contradictions of trading is that it is offer a gift and a curse at the same time. The gift is that perhaps for the first time in our lives we are in complete control of everything we do. The curse is that there are no external rules or boundaries to guide or structure our behavior. The unlimited characteristics of trading environment requires that we act with some degree of restraint and self-control, at least if we want to create some measure of constant success. The structure we need to guide our behavior has to originate in your mind as a conscious act of free will. Uh, this is where the many problem begins. राइट, ओके। अंसार जी, चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे अपने बुक को। इसके बाद है, कल हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम द विलिंगनेस टू क्रिएट Create you. रूल्स, राइट। तो आज हमने ये एंड में पढ़ा गैम्बलिंग गेम्स और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस है। एम आई राइट? Yeah. तो चलिए थोड़ा सुनते हैं अंसार जी से। मतलब मैम मीन्स ये यहाँ तक मुझे समझ आया है, कहना चाह रहा है कि जैसे कोई भी ट्रेड में हम जाते हैं, अगर वो अगर जैसे कोई लूजिंग ट्रेड्स में वो अगर हमारा ट्रेड चला जाता है तो हम क्या करते हैं, वो एक उम्मीद होती है हमें कि वो ऊपर आएगा, और हम अपना टर्मिनल या तो बंद कर देते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि जाएगा जाएगा। वो क्या होता है, हमारे सारे पैसे जो है वो वाइंड अप कर देता है। इससे क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है हमारी ये है कि आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तो वो और नीचे जाते 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 हमारे सारे पैसे ले जाता है। और शुरू में क्या होता है, वंस इन अ वाइल हम जीत भी जाते हैं। ये गैम्बलिंग बिना किसी रूल के, बिना किसी बाउंड्रीज के हम आते हैं, सट्टा ट्रेड करते हैं। इट इज लाइक एज गैम्बलिंग। तो अगर वैसे करते हैं तो एक आध तुक्का तो लग ही जाता है, पर हर तुक्का नहीं लगता है, तो उससे लूजिंग ट्रेड होता है। दैट्स इट। तुक्का लगते लगते एंड में एक ऐसा तुक्का लगता है कि जो भी कमाए होते हैं वो सब चले जाते हैं, वो सारा एक बार में चला जाता है। तो इसलिए बेटर है कि तुक्का ना लगाने की बजाय हम प्रोसेस फॉलो करें, है ना? मेक अ प्रोसेस। यस। कोई और अपनी लर्निंग शेयर करना चाहेगा? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं गैम्बलिंग और मार्केट को भी डिफाइन करने की कोशिश की गई है, हाउ डिफरेंट दे आर। यस Yes. यस मैम, वो सब कोई सोचते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मार्केट इज गैम्बलिंग। मैं भी यही सोचती थी, पर ये क्लास करके समझ में आया कि नहीं है। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? मैम, मैं अपने हस्बैंड को पता है शेयर मार्केट करने नहीं देती थी, ये क्लास
और अब आप गलत समझती हूँ। और अब आप खुद छक्के चौके मार रही हैं। अभी तक तो कुछ नहीं है मैम, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया कर रही हैं, कीप इट अप। दिखता है बस करती कुछ नहीं हूँ। आजकल नहीं कर रही हैं, बट अभी कुछ दिनों पहले तक तो अच्छे से कर ही रही थी, अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आपने आई थिंक थोड़ा पॉज ले लिया है। एम आई राइट? यस। कोई बात नहीं, ये देखिए अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉक्स भी यहीं रहेंगे, कंपनीज भी यहीं रहेंगी, बट फैमिली लाइफ प्रायोरिटी है। ये मन में है, सलील सर ने बोला मार्केट यही है, ये देख के भी जाएगा। हाँ, ये कहीं नहीं जाने वाला है, और अगर इसमें हम पैनिक करके घुसे तो पैसे जरूर चले जाएंगे। हाँ यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा, और एल्स वी कैन मूव ऑन टू द आवर गोल राइटिंग सेशन। चलिए, तो गोल राइटिंग कर लेते हैं आज का। जो कुछ नए लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेशन के एंड में हम गोल राइटिंग एंड ग्रैटिट्यूड राइटिंग लिखते हैं, इसको हम अगले 40 डेज तक कंटिन्यू करने वाले हैं। 40 डेज के बाद हम सबकी शेयरिंग लेंगे। तो गोल राइटिंग में आप कोई शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल लिख सकते हैं। अभी सेशन के दौरान ही लिखना है, मीटिंग लीव नहीं करनी है। और ग्रैटिट्यूड आज पूरे दिन में या अभी इस पल में आपके मन में जिस चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड आ रहा है, वो 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एनी पॉइंट, चाहे आज आपने बहुत अच्छा खाना खाया हो, किसी बहुत अच्छे इंसान से मिले हो, कंपनी में बहुत अच्छी आज आपकी का दिन रहा हो, बॉस से बहुत अच्छी मीटिंग रही हो, मार्केट में कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ भी जिसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड लिखना चाहते हैं, तो एनी 5 पॉइंट्स ग्रैटिट्यूड के, एंड देन योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes। 9:04 हो रहे हैं। गोल्स हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने चाहिए, ठीक है, कि ये मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा मैं करती हूँ, राइट। ऐसा हमें फ्यूचर टेंस में गोल्स नहीं लिखने, ऐसा अज्यूम करके गोल्स हमेशा लिखना होता है कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा हो गया है। सुबह उठने के लिए एक सजेशन दे सकता हूँ, मेडिटेशन करेंगे ना तो सुबह खुद ही आंख खुल जाती है। पिलो अभी टॉकिंग, हाँ, ना, इफ यू लर्न पिलो मेडिटेशन टॉकिंग कीजिए। प्रॉपरली। उर्मिला पिलो मैम एक क्या पिलो चीज, बोला आपने? पिलो टॉकिंग कि अपने बोल के सोइए कि मैं इतने बजे उठ जाऊं पिलो को, तो वो अपने आप उठा देता है आपको। अ, तो चलिए, कौन अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करेगा आज हमारे साथ कि क्या ग्रैटिट्यूड लिखा है? अनदर थिंग, ग्रैटिट्यूड है, आई थैंक गॉड दैट आई हैड सम टाइम नाउ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टू अटेंड दिस रीडिंग सेशन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। वेरी इससे नाइस। पहले मैंने एक सेशन बीच में थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया था, कुछ प्रॉब्लम था इंटरनेट का, आई कुडंट अटेंड, बट दिस टाइम आई कुड अटेंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड मेरा गोल है कि मैं ये अटेंड जैसे आज किया है करती रहती हूँ और करती रहूंगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तो थैंक यू सो मच, और मेरा ग्रैटिट्यूड है आप सबको कि आपने इतना कीमती समय अपनी इस बिजी भागती दौड़ती जिंदगी में से निकाला, और 1 घंटा बुक रीडिंग सेशन के लिए अपने आप को दिया, और यहाँ जीएसके को भी दिया, जिसमें कि हम सब साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस एंड टाइट स्लीप, और कल सुबह सब ट्रेडिंग में फिर से लग जाइए। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। बाय।